And we have some breaking news coming in right now. The Maharashtra government is set to provide free treatment for all patients who are infected with mucormycosis or black fungus. That's the breaking news that we're getting you at this point of time, that the Maharashtra government has made an announcement, and it has said that it will provide free treatment for all patients who are infected by the deadly mucormycosis or black fungus, which has been reported in COVID-19 patients, those who have recovered. Many people are reportedly sick due to this fungus which has infected them. And the Maharashtra government has made an announcement with regards to this. Joining me on the broadcast is my colleague Alicia. Alicia, good morning to you. Do take us through the latest government order by Maharashtra government. देखिए बिल्कुल जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से अब जहाँ तक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो देखे जा रहे हैं और लगातार इसको देखते हुए कई कंप्लेन जो है सामने आए, इसको देखते हुए अब खुद स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे की ओर से ये बताया गया है कि जो भी पेशेंट्स होंगे जो ब्लैक फंगस से लेकर इन्फेक्टेड होते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। और ये जो ट्रीटमेंट है वो महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत सभी का इलाज किया जाएगा। तो एक कहीं ना कहीं पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही है। और इम्पोर्टेंटली जहाँ तक हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे इस पूरे मामले को लेकर जो है काफी मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। Right, we're going to be tracking these developments very closely. Thank you so much for joining us on the broadcast.